Okay, so good morning, all of you. Sorry, I couldn't take your class on Saturday as I was busy with end-term exams of class first semester. So Good last morning, ma'am. time, good morning. Last time we were doing seed testing for quality assessment. So I have given you a brief idea what is seed testing, why it is done. Now coming to how it is done. Okay, so seed testing क्या होता है? You check for purity of the seed, the physical purity. I'm not talking about the genetic purity, but the physical purity. Then you also check for the moisture content of the seed. We also see, is the seed viable or not, is it able to germinate properly or not. So these are some of the factors which we uh, uh, these are the attributes that we test during the seed testing. And how it is done? So for seed testing, first of all, we do the sampling of the seeds. Then the second step is we go for physical purity of the seed. Then we do the germination test, then the viability test, and also the moisture content. Now coming to sampling of the seeds, how sampling is done. So in case of sampling, class atala. So in case of sampling, it is required to obtain a sample of required quantity representing the seeds lot in a true sense, and samples they are derived from different portions of the seed lot. So क्या होता है कि जब पूरा आपका क्रॉप प्रोड्यूस है डिफरेंट फील्ड से वो आ जाता है तो सेम वेराइटी के जो लॉट्स होते हैं वी कीप देम टुगेदर एंड वी डू द सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग जो है इट मे बी smaller portion, it may be composite or it may be simple sampling. Now, what is composite and simple sampling? So simple sampling mein you don't have to do anything. You bring the seeds from the field and you take a small quantity of the seed and you go for the testing. That is it pure or not, is it physically pure, is it viable, is it able to germinate properly or not, the moisture content of the seed is appropriate or not. So you take a seed from a particular lot and that is the primary sample that you do the sampling from the primary sample. Field से आपने seeds collect किए, you bring the seeds to the laboratory और आपने जो है उस lot के seeds को देखा, चेक किया, that is the primary sampling. Now coming to another type of sampling, that is composite sampling. As the name suggests, composite, इसमें क्या करते हैं हम primary samples different field से लाकर एक composite mixture बनाते हैं, ठीक है, and at least 10 samples should be taken at a particular time in case of composite sampling. कम से कम 10 जगह से अलग अलग 10 जगह से सेम क्रॉप के सीड्स आपके पास होने चाहिए और उसका एक कॉम्पोजिट मिक्सचर बना के देन वी डू द टेस्टिंग. देन कम्स द सबमिटेड सैंपल. सबमिटेड सैंपल क्या होता है? जिस सैंपल को हम सबमिट करते हैं टेस्टिंग अथॉरिटी के पास to get it checked, that is known as submitted samples. Any confusion to anyone? What do you mean by sampling? How it is done? I have confusion. Yes, you can ask. What is the procedure of a seed testing and seed sampling? What is the procedure of seed sampling and the other one? Seed testing. बेटा सीड टेस्टिंग के डिफरेंट पार्ट्स हैं. आप जब सीड टेस्टिंग करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको सैम्पलिंग करनी होगी. हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो सीड सैम्पलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड टेस्टिंग. क्लियर अहमद? Yes, ma'am. Okay, now coming to the next thing, after sampling we go for physical purity analysis. So how it is done? Physical purity analysis, it is basically done by two methods. Either you do physical purity analysis based on the number or based on the weight. How? We do the physical purity analysis based on the number. आपने जो आपका सैंपल था आप उसको लेकर आए
after doing the sampling, you go for physical purity analysis. उसमें आप देखते हैं based on number के आपके उस particular sample में कितने seeds ऐसे हैं जो दूसरे crop के हैं, या उस सैंपल में कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो किसी वीड के हों, या कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के सीड्स तो प्रेजेंट नहीं है. ऑब्जेक्शनेबल वीड जैसे कि मस्टर्ड में आर्जिमोन मेक्सिकाना, वो आपको ऑलमोस्ट दे लुक सिमिलर एंड इट रिक्वायर प्रॉपर टेस्टिंग. तो आप फिजिकल प्योरिटी जब टेस्ट करते हो तो बेस्ड ऑन नंबर, सो यू गो फॉर 3 थिंग्स. आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक फॉर the seeds of other crops, then the total weeds that are present, and then the objectionable weeds that are present in that sample. ठीक है, आप नंबर चेक करते हो आपके उसमें एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने कितने अलग अलग तरह के सीड्स पाए गए हैं. देन बेस्ड ऑन नंबर आप देखोगे कितने प्योर सीड्स हैं, कितने अदर सीड्स हैं, और कितने इनर्ट मटेरियल है. तो उसमें बेस्ड ऑन वेट आप उसका वेट करोगे. Now coming to just sharing this screen. Can you see it now? Physical purity analysis. Yes, ma'am. So physical purity analysis में हम क्या करते हैं, based on number and based on weight. तो based on number में आपने देखा, then based on weight, the weight of pure seeds, the weight of other seeds, and the weight of other inert material. Now in detail, the physical purity analysis by weight by means of number to identify and determine the seeds of species other than the seed crop present in submitted sample and constituting the seed lot by number. तो इसमें आप ये देखते हो उसमें कितना नंबर दूसरे सीड्स का प्रेजेंट है. ओके, you don't have to go for the apparatus. आप इसमें देखिए, now you can look at the figure. Seeds other than the crop variety under considerations are separated in different cups. आप different vessels में either you use cups or other vessels, उसमें आप जो है काउंट करके निकालते रहते हो अदर क्रॉप के सीड्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी इंटर क्रॉपिंग में होता है कि एक क्रॉप के सीड दूसरे क्रॉप के साथ मिल जाते हैं, तो आप उसमें काउंट करके अलग कर दोगे कि अदर क्रॉप के सीड्स कितने निकले. वीड्स हैं, टोटल वीड्स कितने निकले. हो सकता है कि एक ही क्रॉप में 3-4 तरीके के वीड्स हों, तो आप उन 3-4 तरीके के वीड्स को अलग कर लोगे तो टोटल वीड्स के कितने सीड्स निकले. देन ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड्स, ऑब्जेक्शनेबल में जो ऑब्जेक्शनेबल वीड्स वो होते हैं जो आपके दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. ओके, then seeds other than the crop variety, they are separated out and counted and their number is reported. Now this is some of the standard that is given by the testing authorities कि एक पर्टिकुलर क्रॉप में कितने आप जो है ये डिफरेंट सीड्स जो हैं वो हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल चिकपी, फील्ड पी और राइस बीन में जो है सर्टिफाइड सीड्स में जो मैक्सिमम लिमिट है इट शुड बी अप टू 5%. ओके, 5% से ज्यादा सीड्स का मिक्सचर नहीं होना चाहिए. In case of rice, wheat, pearl millet and other crops, it is 20%. Okay, so you don't have to go in much detail about this. Now coming to the purity analysis by weight. इसमें आप क्या करते हो, the working sample it is separated into pure seeds, other seeds and inert matter, and the physical purity percentage it is determined by weight. आपने जो प्योर सीड्स को निकाला, अदर सीड्स को निकाला और या इनर्ट मटेरियल को जो आपने निकाला, आप उसका वेट करते हो. हाउ मच इट वे व्हेन यू टेक आउट फॉर व्हेन यू टेक आउट दिस मटेरियल फ्रॉम द सैंपल्ड सीड्स.
और जो प्योर सीड्स हैं, the seed of allotted crop, it is considered as pure if it consists of immature seeds, shriveled seeds, diseased seeds, germinated seeds, undersized seeds, or piece of seeds unit that are larger than the original size, larger than the half of the original size. तो इसमें आप जब सेपरेट करते हो ऑन बेसिस ऑफ वेट, तो प्योर सीड्स में आप, प्योर सीड्स क्या होती हैं, उसी क्रॉप की जो सीड्स हैं, ओके, उसी क्रॉप की सीड्स में आप सारी सीड्स कलेक्ट करोगे, चाहे वो सीड्स इमेच्योर हो, श्रिवल्ड हो, या उन सीड्स में कोई डिजीज लगा हो, या वो सीड्स जो है पार्शली जर्मिनेटेड हो, या उन सीड्स का साइज छोटा हो, या वो जो है थोड़ा लार्जर साइज की हो बिकॉज ऑफ सम पेस्ट और पैथोजन इन्फेस्टेशन, ओके। तो इस सेम क्रॉप की सीड्स जो है आप उनको विल काउंट देम एज द प्योर सीड्स. Then other seeds में any other crop or weed that are sorted out during physical purity analysis by number, they are called the other seeds. Then inert material. Inert material में क्या होता है, कभी कभी प्लांट का कोई पार्ट भी आ जाता है सीड्स के साथ, सॉइल पार्टिकल्स आ जाते हैं, कभी कभी इंसेक्ट्स के प्यूपी हैं, लार्वी हैं, या उनके कुकून्स हैं, या निमेटोड गॉल्स हैं, they also get mixed with the seed sample, so these are called as the inert material. तो इनको भी आप सेपरेट कर लेते हो और उसका आप वेट करते हो. सो दिस इज हाउ यू टेस्ट फॉर प्योरिटी बेस्ड ऑन द वेट. Okay, so pure seeds, in this slide you can see the pure seeds, and they contains healthy, immature, diseased, germinated, undersized, shriveled, and piece of seed unit larger than half of the original size. Then in case of other crops, you have wheat seeds, objectionable wheat seeds, other crop seeds. In case of inert material, we have soil particles, plant parts, nematode galls, or seeds of allotted crop with half of its original size without the seed coat. इसमें seed coat present नहीं है. Then we also see the multiple seed units. कभी कभी क्या होता है कि fertile floret या उसका कोई plant part उसके साथ आ जाता है, that is also weight. उसको भी हम देखते हैं. Huskless seeds, they are also used in samples. जैसे राइस में है, अगर उसका हस्क हटा हुआ है, so it is removed and counted to work out the percentage of huskless seeds. क्योंकि जर्मिनेशन के लिए आप जो है उसको रिमूव नहीं कराते ना, वी यूज द सीड कोट और द अदर थिंग्स टुगेदर. तो हस्कलेस सीड्स को भी आप रिमूव कर देते हैं एंड आप उसका भी जो है आइदर यू calculates its weight or its number, and the minimum permissible limit for huskless seeds, it is 2%. Any confusion to you in how we check out the physical purity? No, ma'am. Apart from Ahmed, anyone else who has any confusion? No, ma'am. Okay, then coming to after the we have learned about sampling, then we have learned about the physical purity. Now coming to the germination test, seed germination test. So what is germination? I'm sharing the screen again. Now can you see it on the screen? Yes, ma'am. So germination test, it is an index indicating the capacity of a seed to produce a normal and healthy seedling under optimum conditions. Important thing is under optimum conditions. कोई भी आप seed लो, it should be able to produce a normal and healthy seedlings, but the criteria, the important criteria is that the conditions should be optimum for its growth. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विंटर क्रॉप्स के सीड्स लो और आप उसको समर में सोइंग करो, तो हो सकता है कि वो जर्मिनेशन
उसका प्रॉपर जर्मिनेशन ना हो. तो इट इज बिकॉज द एनवायरमेंटल कंडीशंस दे आर नॉट ऑप्टिमम. उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द सीड जर्मिनेटेड इन वार्म टेम्परेचर्स. तो वो जो है हो सकता है कि आपकी सीड जर्मिनेट ना हो. तो इसलिए एनवायरमेंटल कंडीशंस या जो है दे शुड बी ऑप्टिमम. What is germination? It is the emergence of essential structures of seedlings from embryo, and it determines the potential of a seed to develop into normal plant under favorable conditions. And what are the essential structures that are included in the germination of seedlings? The root system and the shoot system. आप कैसे करते हो जर्मिनेशन टेस्ट? जर्मिनेशन टेस्ट के लिए वी हैव पेपर टॉवल टेस्ट, वी हैव सैंड टेस्ट एंड वी हैव फिल्टर पेपर टेस्ट. तो ये जितने भी हैं, आइदर यू गो फॉर फिल्टर पेपर और सैंड और पेपर टॉवल टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटा. और जो आपकी सबस्ट्रेट्स है, सबस्ट्रेटम है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इट शुड नॉट कंटेन एनी insect or foreign seeds. It should have good water holding capacity and the pH should range within 6 to 7.5. So these are some of the essential criteria that the substratum should possess before you go for germination test. Clear to all? Yes, ma'am. Okay, now in this slide you can see the different substratum that is recommended for germination test of different crops. For example, filter paper test is recommended for rapeseed and mustard, sesame seeds, pearl millet, then minor millets and other cole crops, cumin, turnip and all that. Filter paper test या paper towel both are recommended for sorghum, linseed, berseem, coriander, carrot, lettuce, spinach. Then paper towel and sand test. We go paper towel and sand test for maize, barley, oats, sunflower, groundnut, French beans and other Indian beans. Then all the three, that is the filter paper, sand and paper towel test, it is recommended for rice, wheat, okra, tomato, radish, brinjal, onion, etc. And likewise, paper towel test, it is given for pumpkin, muskmelons, watermelons, gourds. Filter paper and sand test we have for buffalo grass. So these are some of the substratum that are recommended for germination test. Now for germination test, minimum 400 seeds they are required. Okay, after going for the purity test, you take out 400 seeds and then you carry out the germination test on the prescribed substratum, either for paper towel or paper towel में आप क्या करते हो? Can you see it on the screen? The paper towel ये कुछ brownish color का होता है and it is somewhat rough and it has good moisture holding capacity. तो आप paper towel लेते हो, उसको पानी में dip करते हो and then you place the seeds. And after placing the seeds, you place that paper in germinator or incubator, and after 2 to 3 days we look for how many seeds have germinated, how many seeds have shown germination. So you count that and you note it down in your notepad कि कितनी seeds germinate हुई हैं. तो the process, the crop variety, तो आपका जो पेपर टॉवल है उस पर आपको मेंशन करना होता है क्रॉप वेराइटी कौन सी ले रहे हो, कौन सी क्लास है, किस डेट में आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो. यू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन कीपिंग इन माइंड दैट यू यूज द बॉल पेन, बिकॉज अगर आप इंक पेन यूज करोगे या कुछ जेल पेन टाइप का यूज करोगे तो इट माइट बी कि वो जो है वाटर की वजह से वो जो है इंक जो है इट मे डिफ्यूज एंड व्हाट यू हैव रिटन यू मे नॉट बी एबल टू रीड इट. So you write down all the information, you dip down the paper towel in water for proper moistening. Then moist towel, it is stretched on a clean table. Then 50 seeds they are arranged on half portion of the paper towel. आप पहले paper towel लेते हो, उसको दो parts में fold कर लेते हो
और जो seeds हैं 50 seeds they are arranged on half portion of the paper towel. और अरेंजमेंट का भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है. ये 5 rows होती हैं and in 5 rows you have 10 seeds and these 10 seeds they are placed approximately 3 centimeters apart. Can you see it how you place it? Say yes or no. Is it visible to you or not? Yes, ma'am. ठीक है, आप देख सकते हो 5 सीड्स हैं, 10-10 की 5 rows हैं and in each row you have 10 seeds. So this is how you arrange the seeds. Then the remaining half of the paper towel it is used to cover the seeds. Then you fold it and you roll it with the help of rubber band. You close its ends and then you wrap it in wax paper and place it either in germinator or in incubator. Okay, and the incubator or germinator it should have a proper temperature. For kharif crops the temperature recommended is 25 degrees centigrade and for rabi crops it is 20 degrees centigrade. Then similarly follow the sand method. In sand method we require sterilized sand, distilled water, tub, tray and germinator. Now what is the procedure? What is the method? You take the sterilized sand and immerse it in distilled water. The excess water it is removed. Then the sand it is placed on a tray that has a depth of about 6 to 9 centimeter. Then counted seeds they are placed. They are counted seeds they are planted on that leveled sand at proper distance as you can see it. And the arranged seeds they are covered with a layer of dry sand. And you don't make a thick layer. You don't cover it with a thick layer. एक बहुत हल्की सी लेयर से हम उसको कवर कर देते हैं so that the shoots they don't find it, the germinating shoots they don't find it difficult to come out from the sand. Okay, and you place that sand tray in germinator. और paper towel method में भी you use filter paper, petri plate, forceps, water and germinator. So what is the process? आप filter paper लेते हो, you cut it about the size of the petri plates that you have. On that filter paper you first of all write all the essential things required, that is the crop that you are using, which variety you are using and the class in which you are studying, the date you have, and after that we cut down the filter paper in circular shape, that is the shape of your petri plate, and then it is moistened with distilled water and 3 pieces of filter paper they are taken together. And this is the petri plate. You place that filter paper on the petri plate, the moist filter paper, and with the help of forceps we place the seeds on that on the filter paper that we have placed in the petri plate. लेकिन इसको रखने का एक particular pattern होता है and that is 1 plus 9 plus 15 fashion. सबसे सेंटर में आप एक सीड रखते हो, फिर आप एक सर्कल बनाते हो, इमेजिनरी सर्कल, एंड इन दैट ऑन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट इमेजिनरी सर्कल आप 9 सीड्स को प्लेस करते हो. फिर जो लास्ट वाला सर्कल है दैट सर्कल इट कंटेन्स 15 seeds. Can you see it on the screen? How you place the seeds? Yes, ma'am. Then we have another method that is pleated paper method. Pleated paper में आप क्या करते हो? You take the paper and you make folds. You can see it on the screen. आप बनाते हो ना पेपर को मोड़ के, जो बचपन में पंखा बनाया करते थे, if you remember. किया है बचपन में कभी? स्कूल में लाइट नहीं आ रही है, अपना कॉपी से पेज फाड़ के अपना वो हैंड फैन बनाते थे बच्चे. I don't know you people have done it or not, but we people have done it a lot. So आप पेपर को फोल्ड कर करके you fold the paper in a pleated manner, and then in each pleat you dip the paper in water, distilled water, and in each pleat you place the seeds and you cover it with the wax paper and place it in the germinator, and then you
go for the germination test. And treated paper method, it is generally recommended for all the crops that belongs to cucurbitaceae family. Now how you evaluate the germination test? आप कैसे evaluate करोगे seeds germinate हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? So each seedling, it is critically evaluated on the day prescribed for first count and final count. Now what is first count and final count? आपने germination test के लिए seeds को रखा तो ऐसा तो नहीं है ना कि same day germination हो जाएगा. The seeds, it will take certain time to get germinated. पहले जो seeds का seed coat है, that will get rupture. Then the embryo, it will start differentiating into the radicle and the plumule. So it will take some time. तो उसको जो है evaluate करने के लिए we have the first count and the final count. First count क्या होता है? The first day on which germination is counted, it is known as the first count. And the final count, the last day up to which the seeds should germinate, it is counted and it is considered as the final count. तो जर्मिनेशन में लगाने के बाद पहले दिन जब आपने उसका जर्मिनेशन के लिए देखा, यू गो फॉर काउंटिंग हाउ मेनी सीड्स दे हैव बीन जर्मिनेटेड, दैट इज द फर्स्ट काउंट. और कब तक आप देख रहे हो ये आपके ऊपर है. सम पीपल गो फॉर 10 days, सम पीपल गो फॉर 7 days. सो अकॉर्डिंगली यू राइट इट डाउन इन योर रिसर्च कि आपने उसको जो है कितने दिन के लिए आपका फाइनल काउंट रहा. तो दैट इज द फाइनल काउंट. आपने कौन सा लास्ट डे था जब तक आपने जर्मिनेशन को टेस्ट किया. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, सपोज आपने 100 सीड्स लगाई, फर्स्ट डे पे फर्स्ट काउंट आपने सपोज करो कि आपने फोर्थ डे चेक किया, तो फोर्थ डे जो है माइट बी यू हैव 56 सीड्स दैट शोज जर्मिनेशन, रिमेनिंग 44 सीड्स अभी जर्मिनेट नहीं हुई. आपने नेक्स्ट डे देखा, नेक्स्ट डे आपने देखा कि 10 मोर सीड्स हैव शोन जर्मिनेशन, तो टोटल आपके 64 सीड्स का जर्मिनेशन हो गया. देन यू गो फॉर द सिक्स्थ डे, आपने सिक्स्थ डे देखा कि सिर्फ 4 ही सीड्स ने जर्मिनेशन शो किया है, तो टोटल 70 सीड्स जर्मिनेट हुई हैं. लाइकवाइज आपने 10 डेज तक देखा और 10th डे पे आपने देखा कि 5 सीड्स दैट आर देयर दैट हैवंट शोन एनी जर्मिनेशन. So 10th day is your final count day. After that you won't go अब वो 5 सीड्स जर्मिनेट करें नहीं करें, we are not concerned with that. आपका फाइनल काउंट आपने जो रखा that was the 10th day. And these first count and final count days they differ from crop to crop. जो सीड्स जिनका सीड कोट हार्ड होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है जर्मिनेशन होने में. Any confusion to anyone? What is the first count? What is the final count? No, ma'am. Okay. Now these are some of the examples of crops in which we have the first count. In case of pearl millet, linseed, berseem, jute, common millets, the first count is 3 days. Then in crops like wheat, maize, oat bean, pigeon pea, bottle gourd, sponge gourd, we have first count on 4th day. And in case of seeds like chickpea, rajma, जिनका सीड कोट थोड़ा हार्ड होता है, आपने देखा होगा चना जब बनाते हैं घर में या राजमा वगैरह कुछ बनाते हैं तो वी सोक देम फॉर एटलीस्ट 5 to 6 hours. तो बिकॉज उनका सीड कोट जो है वो थोड़ा हार्ड होता है. सिमिलरली टर्निप है, मेलन्स हैं, उनका सीड कोट थोड़ा हार्ड रहता है. सो उसका जो फर्स्ट काउंट है इट इज जनरली 5 days. Then crops like parsley, celery, they have 10 days of first count. Then final count we have 6 days in case of sesame. Then in case of pearl millet, maize, it is 7 days. Chickpea, cucumber, it is 8 days. Rajma, the final count is on 9th day. Now different types of germination, ये आपने पढ़ा होगा in your class 10th also. There are 2 types of germination, that is the hypogeal germination and the epigeal germination. What is hypogeal and epigeal germination? Anyone amongst you? मैम एपीजियल में होता है कि रूट पहले डेवलप करता है और हाइपोजियल में होता है कि शूट्स पहले डेवलप करता है. Anyone else?
Is he correct or not? चेक करके बताइएगा. आप लोग को हाइपोजियल एपीजियल जर्मिनेशन नहीं पता है? Ma'am, hypogeal germination, it is a type of germination which takes place below the ground, whereas apigeal germination is a type of germination which takes place above the ground. हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडन्स हैं दे रिमेन बिलो द ग्राउंड, while in case of epigeal germination the cotyledons they come out of the ground. इमली का कभी देखा है जर्मिनेशन? कॉटिलेडन्स ऊपर आ जाते हैं, दैट इज एपिजियल जर्मिनेशन. हाइपोजियल में जो कॉटिलेडन्स हैं दे रिमेन अंडरग्राउंड. Now examples of crops that shows hypogeal and epigeal germination. Now evaluation of seedlings. Each seedling, it is critically examined, it is critically evaluated on the day prescribed for first count. Seedlings with all their essential structures normal or badly decayed, they are counted and removed. Remaining seeds and seedlings are left as such and evaluated on the day of final count. तो क्या होता है जब हम इवैल्यूएशन करते हैं जर्मिनेशन का कि सीडलिंग्स डेवलप हो रही है नहीं हो रही हैं, तो जो जैसे जैसे सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो होती हैं, चाहे वो नॉर्मल सीडलिंग्स हो या कभी कभी कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, डिके होने लगती हैं, वी रिमूव दोज सीड्स and the seeds that haven't showed any germination they are left as it is. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज आप 100 सीड्स को प्लेस कर रहे हो तो फर्स्ट डे 56 सीड्स ने जो ऑन द फर्स्ट काउंट 56 सीड्स ने जर्मिनेशन शो किया, तो हो सकता है उन 56 सीड्स में कुछ सीड्स जो हैं वो नॉर्मल सीडलिंग्स में डेवलप हुई हो, कुछ सीडलिंग्स जो हैं वो हो सकता है डिके हो गई हो. तो यू काउंट दोस 56 सीड्स एंड यू रिमूव देम फ्रॉम दैट पेपर और फ्रॉम द सैंड और फ्रॉम द फिल्टर पेपर, और रिमेनिंग सीडलिंग्स को आप छोड़ देते हो फॉर फर्दर जर्मिनेशन. नॉर्मल सीडलिंग कैसी होती है? इट इज इंटैक्ट सीडलिंग्स. सीडलिंग्स विद वेल डेवलप्ड, कंप्लीट, proportionate and healthy essential structures are considered as normal seedlings. Clear to all what are normal seedlings? What do you mean by normal seedlings? Seedlings that are well developed, they have complete, proportionate and healthy essential structures are called as normal seedlings. Then seedlings that have slight defects. Slight defects in one of the essential structures with an otherwise satisfactory and balanced seedlings, they are called as seedlings with slight defects. क्या होता है slight defect seedling में? Seedlings जो हैं they are proportionate, they have all the things similar to the normal seedlings, but उनके structures में कहीं ना कहीं कुछ slight defect आपको नजर आता है. Might be कि उनके जो is anyone saying anything? Okay, the seedlings, they look similar to the normal seedlings, but at some point they have slight defect which make them different from the normal seedlings. So those seedlings, they are called as seedlings with slight defects. Then seedlings with secondary infections. The secondary infections हो सकता है उसमें कोई पैथोजेनिक अटैक हुआ हो या कुछ इस तरह से वो सीडलिंग जो है प्रॉपर्ली डेवलप ना हो पाई हो, तो दे आर द सीडलिंग्स दैट हैव सेकेंडरी इन्फेक्शन. आप देख सकते हो स्क्रीन पे नॉर्मल सीडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनेट, प्लूम्यूल भी ठीक है, रेडिकल भी ठीक है. The seedling, it looks healthy when you look at it, so it is considered as normal seedlings. Now abnormal seedlings, they vary from the normal seedlings. They might have deformed, fractured, white colored, spindly or glassy decay due to primary infections, or they may show some retardation, they may show some broken parts, they may be straight, they may be stunted,
या हो सकता है कि वो जब इमर्ज कर रही हो तो लूप फॉर्मेशन हो गया हो, या सीड कोट में जो है जो इमर्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं आइदर द प्लूम्यूल और द रेडिकल, वो जो है सीड कोट में ही ट्रैप हो गया हो एंड इट माइट बी अनेबल टू गेट आउट ऑफ द सीड कोट. सो इन दैट केस वी हैव एबनॉर्मल सीडलिंग्स. प्राइमरी लीव जो है वो डिफॉर्म्ड हो सकती हैं, मिसिंग हो सकती हैं, निक्रोटिक लीजन्स उस पर हो सकते हैं, नॉर्मल साइज नहीं हो सकता, या कॉटिलेडन्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्वेल कर गए हो, डिफॉर्म हो, उनका कलर वेरी हो गया हो, डिकेइंग हो गई हो, टर्मिनल बर्ड जो है वो डैमेज हो गई हो. सो दीज ऑल थिंग्स दे कम्स अंडर द abnormal seedlings. You can see it on this screen. You have this seedling, it does not show any roots, so the root area, the developing roots or the radical part, it might have got trapped within the seed coat. In the second figure you can see that you are not able to see the plumule. It is because that the stem, it has got trapped within the seed coat. And then here you can see the retarded growth of the roots. शूट का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट रूट्स जो हैं दे आर नॉट in proportion to the shoot, or vice versa. The roots, they are well developed, but the shoot, it is not showing proper growth. Then you have the broken parts, stubby roots हैं, shoots, it is also showing some sort of stubbiness. Then you have the splitted root, the splitted shoot. Then there is some bent that you can see in the developing seedlings. The seedlings, they are showing negative geotropism, that is the roots, they are also going towards the they are also going away from the ground. The developing roots, they are also going away from the ground, while you may see positive geotropism, the shoot, it is also going towards the ground. In this figure you can see the root, it is forming a sort of loop. In the second figure the shoot is forming the loop. So these are some of the examples of abnormal seedlings. कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन बहुत ज्यादा स्वेल कर गया है, दूसरा कॉटिलेडन स्वेल ही नहीं हो रहा है. एक नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कॉटिलेडन जो है it has been broken or it has got this decayed, it is showing some sort of necrotic spots, or one of the cotyledon is missing. So these are some of the abnormalities. And how you write the results after doing the germination test. You write the crop variety, its category, seed sample number, how many replications you have taken, what was the number of which replication number it is. Suppose you have taken 3 replications, so total replications 3, and going for the third replication, so you'll write here replication number 3, date of placement, temperature at which you have kept the substrata, when you have taken the observations, what are the observations that you need to take, that is the seedling, it is normal, intact, or it is showing some defect, or abnormal, or ungerminated seed is there. So with this we have covered today sampling, purity and germination test. Any confusion to anyone in these 3 things? मैम पीडीएफ दे दीजिएगा इसका. Beta, I'll send you the PDF. You can, if you want to go through the book, you can buy the book of Kundan Singh. Otherwise, ये जो PDF है, ये जो है डॉक्टर धीरेन्द्र खरे की PDF है. ये easy to understand and काफी अच्छी इनकी PDF. You will get this PDF online also. I'll share the PDF also. Okay, now coming to seed viability test. Seed viability से आप क्या समझते हो? कोई है क्या उधर? जी अच्छा, आपको आज 19
कल जाना है आपको? Yes, anyone, what do you mean by seed viability? See, seed viability test. In this test, you find out how many seeds they are able to grow into a healthy plants. अगर आप सीड्स को सो करते हो तो माइट बी के अगर बहुत पुरानी सीड्स हैं दे वोंट शो जर्मिनेशन, दे आर नॉट वाइबल. होता है ना, पुरानी रखी हुई सीड्स जो हैं वो बेकार हो गई हैं, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो आप जर्मिनेशन टेस्ट कर, वाइबिलिटी टेस्ट करते हो वेदर इफ यू ग्रो देम, इफ यू सो देम इन द सॉइल, will they be able to develop into normal healthy plants or not. So this is the viability test. And how it is done? It has a principle that a colorless solution of 2,3,5 triphenyl tetrazolium chloride, which is used as an indicator, it reacts with hydrogen that is released by reduction processes in living cells due to action of the enzyme named dehydrogenase. And because of this reaction, it produces a red, stable and non-diffusible substance, that is triphenyl formazine, to distinguish from the colorless dead ones. Can you see it on the screen? डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है. देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे व्हाट इज द प्रिंसिपल, हाउ वी डू द सीड वायबिलिटी टेस्ट? Yes, ma'am. Using triphenyl tetrazolium chloride. Okay, so reagent required, it is tetrazolium chloride, water, balance, pH meter and amber colored bottle. Conditioning media, blotter, paper towel or beaker. Then cutting and piercing device, razor blade, dissecting knives and needles, staining dishes, watch glass, petri plates. Then droppers to remove tetrazolium solution after test period, and magnifying glass or hand lens or stereo microscope. Then preparation of indicator. 1% solution weight by volume of tetrazolium chloride is made in water and pH is adjusted to 6.5 to 7.5 and it is stored in amber color bottle. Okay, amber color bottle में क्यों use करते हैं? Because it might react with the light. Then procedure or the working, 4 replications of 100 seeds each from the pure seed fraction of physical purity test or seeds observed as ungerminated at the end of germination test, they are used for testing. वो सीड्स जिन्होंने फिजिकल प्योरिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया या फिर वो सीड्स that haven't shown any germination at the end of germination test, those seeds they are used. Now, what is the process? The seeds, they are fully immersed in distilled water or kept in water blotter or paper towel for 18 hours to start the activity of dehydrogenase enzyme and to facilitate the penetration of tetrazolium solution. तो पहले जो है 18 hours के लिए we keep the seeds, we immerse the seeds in distilled water and the seeds they are placed on wet paper, paper towel or blotter paper. Then tester of the dicot, it is removed and the embryo of monocot, it is exposed by bisecting the seed longitudinally or laterally or pierced after soaking in water. तो आप सीड्स को लेते हो, डाइकॉट्स की सीड्स का जो है you remove the tester of the dicot seeds and in case of embryo monocots, the embryo it is exposed. You bisect the seeds longitudinally or laterally and then you place it in water. Then the seeds they are completely immersed in 1% tetrazolium solution for 3 hours at 20 degrees centigrade
and it is kept in dark. After 3 hours, the solution it is decanted and excess reagent it is removed with the help of dropper. Then the seeds they are rinsed with water and evaluated. Okay, पहले आपने seeds ली, you dip the seeds for 18 hours in evaluation में आपको क्या नजर आएगा? The seeds they are evaluated with the help of magnifying glass, and you will see that individual seed on evaluation it shows either as viable or dead based on the staining pattern. जैसे जैसे स्टेनिंग होती है वैसे वैसे you come to know whether the seed was it viable or was it dead. तो assessment based on the staining of embryo. अगर embryo it is completely stained, then the seed it is viable. If the embryo it is not stained, it remained unstained, then it means the seed was non-viable. If plumule or radicle was unstained, then also the embryo was the seed was non-viable. Then assessment on the basis of staining of cotyledons. अगर completely stain हो रहा है, cotyledon नहीं है, तो it means it is non-viable. अगर नेक्रोसिस शो कर रहा है, नेक्रोसिस मतलब कुछ पार्ट जो है वो स्टेन हुआ है, कुछ नहीं, देन द इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? अगर नेक्रोसिस शो हो रहा है अनस्टेन्ड टिश्यूज एट द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इट शोज दैट द सीड इट इज नॉन वायबल. एम्ब्रियो के पास वाले टिश्यूज अगर वो उन्होंने कोई स्टेन नहीं लिया, इट मीन्स द सीड वॉज नॉन वायबल. And at the same time, अगर embryo के पास वाले the tissues that are not connected to the embryo they are unstained, then also the seed is non-viable. Then assessment on the basis of color intensity. अगर dark red है तो vigorous seeds, that means they are highly viable. If the color development was pink, then the seeds they showed they were weak seeds. And if dark red fractured, then non-viable. We'll get it clear with the coming slide that shows the diagram. See, in case of maize, can you see the embryo and the scutellum, they are completely stained. It means the seed it is germinable or it is viable. Then in these figures you will see that in figure A and B there is slight deterioration of embryonic axis. Okay, then in case of figure C you will see that radicle it is unstained, while plumule and the seminal roots they are stained. Then in the last figure the radicle and the upper and lower part of the scutellum they are unstained. And the stained area it represents the minimum area of the embryo required for normal germination. So इतना अगर staining हो रही है maize के case में, so it means the seed is germinable, it is viable. लेकिन अगर आपको इस तरह से कुछ नजर आता है तो it means the seeds they are not germinable, they are non-viable. And you see it is not stained properly. पूरा complete staining नहीं है. If you look at the first figure, first slide and the second slide, तो आपको फर्क नजर आएगा. Here you can see some white spot. Can you see it on the screen? The white spot here in the figure A figure, and here there is no white spot. Can you see it or not? Yes, ma'am. So it shows that if there is a white spot, then the seed it is not germinable, and accordingly different crops they have different color that absorption, which shows whether they are viable or not. So any confusion to anyone regarding this? How we prepare the sample, how we go for purity analysis, how we do the germination test, and how we go for the viability test.
any question, any query you people can ask. I'll send you the PDF, okay? Okay, ma'am. 406. आज का डेट है 19 Kroni Singh, Yes, ma'am. Washeen, Present, ma'am.